Hey everyone, thank you so much for joining another episode of Primary Market Chatter. This is the October 3rd week episode. I have forgotten the number. I think it's like 13th or 14th, but yeah, we have been doing this for quite some time. I know we started in July first week, so July, August, September. So it's been almost 4 months that we have been doing this. So if someone has joined us for the first time, just want to tell what we do is that we kind of talk about all the issues, all the IPOs which are going to come in next week. सभी नेक्स्ट वीक आईपीओस की बात करते हैं एंड वी गिव अ रिव्यू ऑफ देम अकॉर्डिंग टू अस फंडामेंटली व्हाट डू वी थिंक अबाउट दीज कंपनीज आर दे गुड और बैड and our review. Just want to highlight a couple of housekeeping news before we get started. We are not SEBI registered research analyst, and this is just think of it just as a conversation between three friends, only for educational purposes. We are not authorized to apply, not apply ratings or anything like that. Definitely consult your financial advisor or do your own due diligence. This can just act as a supplement to your study. Do not think of it as a qualified opinion. It is just a way of expressing our opinion. Having said that, I know Rohit and Yash have already joined. Rohit and Tanmay have already joined. I'll try and see where Yash is, but in the meanwhile, I'll just set up the agenda for the day. I know a lot of people are interested in talking about Hyundai. What does Hyundai mean? Hyundai IPO mean, and especially considering all the negativity, we'll kind of cover all of that. We'll talk about three companies today. Hyundai आईपीओ की बात करेंगे और उसके अलावा दो एसएमई आईपीओ आ रहे हैं. प्रनीक लॉजिस्टिक्स करके एक कंपनी आ रही है, उसके साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो दूसरी कंपनी आ रही है एसएमई साइड ऑफ द वर्ल्ड में जिसका नाम है लक्ष्य पावर टेक, उसकी भी बात करेंगे. एंड इन टर्म्स ऑफ द एजेंडा विल फर्स्ट स्टार्ट विद प्रनीक लॉजिस्टिक्स, देन गो टू लक्ष्य पावर टेक एंड देन हैव अ लॉन्गिश डिस्कशन ऑन Hyundai. So that is what the idea for the day is. इसके अलावा मैंने ना अपना YouTube चैनल भी पिन कर रखा है. If someone has if someone misses any of these companies, they can go ahead and follow the YouTube channel. ऊपर लिंक पिन कमेंट में, पहले कमेंट में भी ये डाला हुआ है. सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसमें एक बार एंकर लिस्ट आ जाएगी यूट्यूब कल Hyundai की. उसके बाद भी हम एक छोटा सा एनालिसिस करके उस पर डालेंगे डायरेक्ट. So definitely make sure that you have followed the YouTube channel because that will be not doing a space. Hyundai का एक और वीडियो डालेंगे फर्स्ट डे ऑफ आईपीओ में, तो उसको भी आप कर लें. उसके बाद हैविंग सेड दैट, लेट मी गेट स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट कंपनी फॉर द डे. जो फर्स्ट कंपनी फॉर द डे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रनीक लॉजिस्टिक्स. एक एसएमई कंपनी है जो 22 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने की कोशिश कर रही है. इसके बारे में वेरी क्विकली, just one question, sorry, before we get started. If anyone has any questions, please feel free to post them in the chat box as well. हम chat box से भी questions लेंगे and if you have any suggestions वो भी आप chat box में डालें. We'll take them as well. इसके साथ ही मैं पहली एसएमई कंपनी की बात करता हूँ, प्रनीक लॉजिस्टिक्स की. सो जो ये कंपनी है ये 22.5 सीआर का एसएमई आईपीओ है. 22.5 सीआर मार्केट से उठाने की कोशिश कर रही है. मंडे यानी कल ही इसका लास्ट दिन है टू अप्लाई इन दिस कंपनी. अगर मैं बताऊं कंपनी क्या करती है, तो कंपनी जो है वो वेस्ट बंगाल की बेस्ड एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है. कई सारी लॉजिस्टिक्स कंपनियां अभी आई हुई है मार्केट में, ये भी उन्हीं में से एक है. और जो कंपनी है वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का काम करती है, लॉजिस्टिक्स करती है. इसके कुछ कुछ क्लाइंट जेप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, 2M जैसे, इन क्लाइंट्स के लिए ये बेसिकली एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है. और इसके अलावा एफएमसीजी में क्लाइंट है, रिटेल में क्लाइंट है. अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके पार्ट्स और क्या क्या चीजें सेगमेंट है जिनसे रेवेन्यू आता है, तो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स है, ये गोडाउन रेंट आता है इनको, ये मैन पावर प्रोवाइड करते हैं लोगों को, स्टोरेज की जगह देते हैं लोगों को, और उसके अलावा स्पेशल सेलिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज कराते हैं कंपनीज के लिए, उससे रेवेन्यू आता है. कहीं भी कंपनी ने ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है अपने डीआरएचपी या आरएचपी में इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स का, विच आर फाउंड रियली नॉट अप टू द मार्क. उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस कंपनी के दो प्रमोटर हैं, प्रणव कुमार और श्रद्धा कुमारी. Pranav Kumar is 29 years old with 10 years of work ex and Shraddha Kumari is 23 years old with 5 years of work ex. तो उनने 18 साल में काम करना चालू कर दिया था because that is the minimum legit age. So I feel that someone else is controlling the company and these are the promoters of the company on paper. But again, I have no way to validate that. But it just feels like not
enough solid background in terms of the promoters of the company. I would not even say solid. They're young, very young people, 29-year-old and 23-year-old. जैसे मैंने बताया कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू जो है वो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार वगैरह से आता है. वेस्ट बंगाल कॉन्ट्रीब्यूट 33%, झारखंड कॉन्ट्रीब्यूट 20%. और कंपनी के कई सारे एम्प्लॉइज हैं, फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, अराउंड 625 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 575 ऑपरेशंस में. आई फील इनने सब एम्प्लॉइज अपनी बुक्स पे ले रखे हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, सो कंपनी के क्लाइंट्स ओवर टाइम बढ़ते जा रहे हैं, बट वो रिटेन नहीं हो रहे हैं. तो जैसे उसमें आरएचपी में साफ लिखा हुआ है 2022 में इनके 14 क्लाइंट थे, 2023 में 27 हो गए, बट उसमें से फिर 11 ही रिटेन हुए, और जो बाकी हैं वो ड्रॉप हो गए. तो ऐसे करके क्या है, ड्रॉप ज्यादा हो रहे हैं क्लाइंट्स. उसके अलावा 2024 में 34 इनके टोटल क्लाइंट्स थे, जिसमें से 19 तो पिछले साल के रिटेन हुए थे, 8 नए आए और 15 ड्रॉप हो गए. सो कस्टमर्स क्या है, रिटेन नहीं हो पा रहे हैं कंपनी से. 56% ही रिटेन है 2024 में, बाकी ड्रॉप हो गए. इसके अलावा कंपनी के पास खुद की फ्लीट है गाड़ियों की, अराउंड 80 गाड़ियां हैं, और छोटी गाड़ियां ये सब, वो टाटा एस गोल्ड, टाटा एस ईवी वगैरह जो गाड़ियां हैं. अब वेरी क्विकली, नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू वगैरह की बात करूं तो रेवेन्यू जो है वो 60 सीआर था 2023 में, जो बढ़ के 66 सीआर हो गया 2024 में. अराउंड 10% का इंक्रीज है रेवेन्यू में, बट पैट एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट है कंपनी का वो बहुत तेजी से बढ़ा है उसी टाइम में. सो जो पैट है कंपनी का वो इन द सेम पीरियड 93 लाख से 4 सीआर हो गया है, यानी 4x जंप है, जबकि रेवेन्यू में 10% ही ग्रोथ है. तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो आप देखोगे कि कंपनी का जो अदर एक्सपेंसेस है वो एक्चुअली 2023 में 4.9 सीआर था, वो 2024 में जब रेवेन्यू बढ़ा है तो अदर एक्सपेंस आई वुड एक्सपेक्ट बढ़ना चाहिए था, पर वो कम हुआ है, 4.6 सीआर हो गया है. सो मोस्ट ऑफ द पैट इज कमिंग फ्रॉम इट. और अगर ये अदर एक्सपेंसेस जब मैंने देखने गया तो अदर एक्सपेंसेस में बाकी सब बढ़ा है, पर जो फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं वो जो है वो 4.3 सीआर से 3.7 सीआर आ गया है, कम हो गया है. जबकि फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस वुड आइडियली भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेवेन्यू. जितना तुम रेवेन्यू करोगे उतना तुम फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस दोगे, तो आइडियली बढ़ना चाहिए था, बट ये कम हुआ है. इसी की वजह से बॉटम लाइन में इंपैक्ट दिख रहा है तुमको, बॉटम लाइन 4 करोड़ की दिख रही है. सो अगेन आई डोंट नो कि ये कितना सस्टेन होगा. और इनफैक्ट जो फर्स्ट क्वार्टर में इनने दिया है, फर्स्ट क्वार्टर में इनने कुछ 22 करोड़ का धंधा किया, उसमें वापस से फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस बढ़ गए हैं. कंपैरेटिवली 1.5 करोड़ का फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है. तो एक स्पेसिफिक ईयर में वो क्यों कम हुए वो क्लियर नहीं हुआ. मैं मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ रहा था, उनने लिखा था कि उनने खुद की गाड़ियां परचेस की इसलिए कम हुआ, बट वो तो पहले भी थी. सो आई एम नॉट 100% श्योर कि वो क्यों हुआ, और उसके अलावा बहुत ज्यादा जानकारी लिखी नहीं है. बट फिर भी अगर मैं वो मान भी लूं तो अराउंड कंपनी ने, जैसे मैंने बताया, FY24 में 4 सीआर का रेवेन्यू किया है, और 4 सीआर के रेवेन्यू पे ये लोग 84 सीआर पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो बेसिस दैट द कंपनी इज कमिंग इन एट आईपीओ ऑफ 21 के पीई पे आईपीओ आ रहा है. तो मेरे को काफी ज्यादा प्राइसफुल लग रहा है. लाइक ग्रोथ कंपैरेटिवली इतनी है नहीं, तो मुझे नहीं लगता इसको 20-21 से ज्यादा पीई मिलना चाहिए. सो मेरे हिसाब से काफी ऑलरेडी लाइक नथिंग लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर न्यू इन्वेस्टर्स. और इनने अपना जो लिस्टेड पीयर दिखाया है वो एसजे दिखाया है, जो 37 के पीई पे. बट एसजे एक एसेट लाइट कंपनी है, एसेट हैवी कंपनी है. एसजे डज मरीन शिपिंग, जो कि बहुत ही अलग है इससे. सो कांट बी कंपेयर्ड विद दैट. आई फील इसका एक बेटर पीयर होगा आशापुरा लॉजिस्टिक्स करके एक कंपनी बहुत ही रिसेंटली आई थी. वो आई थी लगभग 15 पीई पे आई थिंक, एंड वो बी लाइन का एक इशू था, बट वो भी सस्टेन नहीं कर पाया 15 पीई को भी. 144 रुपए का आया था, आज 118 रुपए का है, तो ये उस हिसाब से 20 पीई पे आ रही है. सो आई रियली डाउट कितना सस्टेन कर पाएगी ये कंपनी. हैविंग सेड दैट, दैट इज द रिव्यू. उसके अलावा एक दो चीजें जो मैं और देख रहा था कि ये जो कंपनी है ये नानोलिया इसका एलएम है. LM of the company is Nanolia. So decent is nothing good, nothing bad about the LM as such. But having said that, that is my review. I would completely avoid the issue. Or maybe very, very risk-taking people can apply only for listing gains. I do not see anything in this issue for the long term. That is what my review of Pranik Logistics was. ठीक है, maybe let me, although this doesn't need any introduction, but still setting up Hyundai, this is a big ass issue. 27 KCR का issue है. 27,000 करोड़ कंपनी रेस कर रही है Hyundai, which is the second largest passenger vehicle company in India. 14% market share है इनके पास. So maybe Tanmay, do you want to very quickly set up
Hyundai while I try and add to it, and then we can take it forward from there. And I'll also try and find well, yes, इज माई वॉइस क्लियर? yes, हाँ, पहले तो मैं दो चीज बता दूंगा कि पहला, सी, एवरी टाइम मैं Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड या फिर Hyundai मोटर्स कॉर्पोरेशन नहीं बोल पाऊंगा, तो वो HMI विल बी Hyundai मोटर्स इंडिया एंड HMC विल बी Hyundai मोटर्स कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी। तो फिर उतने हिसाब से इंटरप्रेट कर देना। और दूसरा चीज, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो एक आध बार थोड़ा वॉइस वगैरह लैग हो गया, फिर उतना मैं रोज की तरह स्पिरिट में नहीं रहा, तो उतना एडजस्ट कर लेना। So Hyundai Motors India Limited was incorporated in 1996. Hyundai Motors India is promoted by HMC, which is world's third largest auto OEM. OEM is original equipment manufacturer. HMI is India's second largest auto OEM in passenger vehicles PV segment. Its portfolio include sedans, hatchbacks, HUVs, and EVs. The company has some very successful models like Grand i10, Elite i20, Creta, Verna, Venue, Exter, Ioniq, Alcazar. So the company is raising 27,856 crores. Complete issue is an offer for sale, OFS. The shares will be sold by HMC Korea, which is their parent company. So now we'll come to its financials. In FY23, it did a revenue of 60,307 crore rupees and profit after tax PAT of 4,709 crores. In FY24, the company did a revenue of 69,830 crores and a PAT of 6,060 crores. It has also published its Q1 results of current financial year FY25. The company delivered a top line of 17,568 crores and a PAT of 1,490 crores. मतलब FY25 के फर्स्ट क्वार्टर, मतलब जो जून क्वार्टर था, उसके अंदर इन्होंने अराउंड 4% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है पिछले साल के Q1 से। Q1 FY25 वर्सेस Q1 FY24 देयर वाज अ 4 to 4.5% ग्रोथ। कंपनी ने अपना मार्केट कैप लगाया 1,59,258 करोड़, 1960 के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से। इसका जो पी निकल के आ रहा है 26.28 टाइम्स निकल के आ रहा है। अभी ये कंपनी को मैं नॉर्मल आईपीओस की तरह नहीं करूंगा, मैं इसके पॉजिटिव और निगेटिव्स कंपेयर करके आपको बताऊंगा। इस पहले से एक पॉजिटिव्स पे आता हूं मैं। कंपनी करंट फाइनेंशियल FY24 के फोर्थ क्वार्टर, मतलब अराउंड जनवरी से मार्च के बीच, अपनी नई क्रेटा ईवी लॉन्च करने वाला है और मार्केट में इसका क्रेज बहुत ज्यादा है। मतलब इट इज एक्सपेक्टेड दैट क्रेटा ईवी विल claim number 1 और number 2 market share in next 6 to 8 months, ऐसा reports बता रही है। The second one is the company is set to commence their Talegaon Pune plant in late FY25 to early FY26. Okay, तो कंपनी का आज का करंट कैपेसिटी है 8.1 लाख यूनिट्स एट तलेगांव प्लांट। पहले फेज में 1,70,000 नए यूनिट्स आएंगे और 80,000 इन फेज 2। द कंप्लीट कैपेसिटी is set to get operational in FY28. Third positive for Hyundai is its parentage. The company is a subsidiary of HMC Korea. HMC Korea has access of each and every technology in the world. HMC Korea is one of the most innovative and diversified auto OEM in the world. Now, I will come to its negatives. कंपनी ने आईपीओ लाने से जस्ट पहले 10,782 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड कंपनी से बाहर निकाला है। इससे क्या हुआ, कंपनी का कैश बैलेंस बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ गया और कंपनी के कुछ रेशोज लाइक प्राइस टू बुक रेशोज या फिर कुछ और रेशोज बहुत हेवीली चेंज हो गए। और दिस सेकंड नेगेटिव फॉर दिस इज द रॉयल्टी। आई थिंक एमएनसी कंपनीज में पेइंग अ रॉयल्टी इज अ नॉर्मल थिंग। ये कंपनी अराउंड 3.5% रॉयल्टी पे करता है। एक्चुअली वो रिसेंटली 2.7% था, उन्होंने अभी जस्ट आईपीओ से पहले बढ़ाकर वो 3.5% किया है। एंड मैनेजमेंट का ऐसा क्लियरली बताना है कि फॉर मीडियम टर्म ये रॉयल्टी 3.5% के बियॉन्ड नहीं जाएगा। थर्ड नेगेटिव फॉर दिस कंपनी इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इट्स करंटली स्टैंडिंग एट 95% यूटिलाइजेशन एंड आई सॉ वन ऑफ इट्स चेन्नई प्लांट्स, इट इज इवन यूटिलाइजिंग 103-104%। मतलब ये एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेके या फिर किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। द फोर्थ थिंग इज जो क्रेज इनकी गाड़ियों में था, लाइक एसयूवी स्पेशली क्रेटा वगैरह, वो 2 साल पहले 1 साल पहले बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था, बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड्स हुआ करते थे। बट अभी क्या हो रहा है करंटली,
बहुत सारे ऑटो डीलरशिप्स के पास हेविली इन्वेंट्रीज पड़ी है, तो they are basically giving discounts. I know all auto OEMs give discounts in the festive season, but Hyundai a bit comparatively ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि उनका इन्वेंट्री स्टैकअप हो चुका है. फिफ्थ नेगेटिव फॉर दिस कंपनी इज, मैं इसके ग्रोथ आउटलुक पे आऊंगा. FY22 में इन्होंने 27% ग्रोथ किया, FY23 में वो 15-16% रहेगा, पिछले साल भी आई थिंक 11-12% था, बट द ग्रोथ आउटलुक फॉर FY25 इज जस्ट 5.5 to 6.5%, मतलब रफ रफ में 6%. एंड द सिक्स्थ निगेटिव वुड बी, जो मुझे पर्सनली बहुत बड़ा निगेटिव लगा, बाकी तो मैं इग्नोर कर दूंगा. Hyundai Corporation, HMC Korea also owns one more company called as Kia Corporation. जो Kia ब्रांड से जो गाड़ियां चलती है वो भी Hyundai ग्लोबल ही ओन करता है. एंड इन इंडिया Kia Corporation और Kia Motors Private Limited, which is their Indian subsidiary, and Hyundai Motors India Limited, which is going to be the listed entity, both are different companies. So there is a clear cut conflict of interest between the both. बिकॉज Hyundai कोरिया दोनों पे हेविली इन्वेस्ट कर रहा है, हेविली प्रमोट कर रहा है दोनों को. एंड आपने देखा होगा कि 2022 में किया का मार्केट शेयर लेस देन 1% था, बट आज ये 4-5% पे आ चुके हैं. तो दिस इज अ सीरियस थिंग. अभी मैं इसका पीयर कंपैरिजन करूंगा थोड़ा सा. मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि आप अगर कोई भी ऑटो कंपनी को आप अगर कंपेयर करने जाओगे तो आपके सामने 4 नाम दिखेंगे: Hyundai, Maruti, Mahindra and Tata Motors. But personally saying, Tata Motors cannot be compared with Hyundai. Reason being, majority revenue of Tata Motors comes from the Range Rover and Land Rover and the UK unit. And Tata Motors के फाइनेंशियल में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो we cannot compare Tata Motors with Hyundai और Maruti. The second one would be M&M. वे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो वो एवर डिमांडिंग पोर्टफोलियो है. 80% ऑफ M&M's पोर्टफोलियो हैज अ हेवी वेटिंग पीरियड. आफ्टर एक्वायरिंग डिजाइन कंपनी इन 2022 उनके कंप्लीटली मॉडल्स चेंज हो चुके हैं, एंड उनका ग्रोथ आउटलुक ऑलमोस्ट इंडस्ट्री आउटलुक से 1.5 से 2 गुना है. एंड द सुपेरियोरिटी ऑन द रेशियोज, ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, ऑन द आउटलुक एंड द प्रोडक्ट लॉन्च साइड, M&M कैनॉट बी कंपेयर्ड विद बोथ दिस गाइज. So it's clearly visible that Hyundai can be compared with only and only Maruti on a macro level. तो अगर मैं प्राइस टू अर्निंग्स पी रेशो पे आऊं तो Hyundai is coming at 26.3 times. Maruti is valued at 29.8 times. मतलब इनके वैल्यूएशन में रफ में 12 से 13% का डिफरेंस है. The second one is EV EBITDA. EV EBITDA भी इस इंडस्ट्री में एक अच्छा रेशो माना जाता है टू कंपेयर. EV EBITDA basis पे Hyundai is coming at an EV EBITDA of 15.8 times, and Maruti is currently trading at an EV EBITDA ratio of 19.6 times. मतलब दोनों में 24% का डिफरेंस है. Hyundai 24% अपने अपर प्राइस बैंड के हिसाब से चीप आया है टू Maruti on EV EBITDA basis, and 12 to 13% on the P side. Now अगर आपने अगर एक अपडेट देखा होगा तो आई थिंक 8-9 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था नोमुरा की तरफ से कि Hyundai Motors शुड गेट अ प्रीमियम अबाउ मारुति सुजुकी. मैं अभी इस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा, बट मैं कुछ पॉइंटर्स देना चाहूंगा. सी Hyundai अगले 3 साल में अपना जो स्ट्रेटेजी है वो SUVs और हैचबैक्स. एंड नाउ सी, पहली बात तो ये अभी 4th क्वार्टर में क्रेटा ईवी लॉन्च कर रहा है, एंड द कंपनी हैज क्लियरली स्टेटेड कि अगले 1.5 साल में हमारी और 3 ईवीज ईवी मॉडल्स लॉन्च होने वाले, उसमें से 1 या 2 स्पेशल मॉडल स्पेशल रहेगा. मतलब अपने क्रेटा का देखा होगा तो नॉर्मल आइस वगैरह का पोर्टफोलियो था अभी, बट नाउ दे आर कमिंग इट विथ एन ईवी सेगमेंट ऑफ द क्रेटा. बट ये कुछ 1 या 2 नए मॉडल्स, मतलब कंप्लीटली एक्सक्लूसिव ईवी मॉडल्स भी लॉन्च करने वाले. Hyundai is a perfect play for the premiumization segment for India. मारुति का अगर आपने आउटलुक देखा या फिर मैनेजमेंट कमेंट्री देखी तो प्रीमियमाइजेशन लेवल पे मारुति इतना एग्रेसिव नहीं है, बट Hyundai के पास ग्लोबली बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इन द प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट. सो द आउटलुक आफ्टर FY25 कैन बी ऑन अ ब्राइट साइड फॉर Hyundai Motors. कंपनी ने 32,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया टिल FY30. मुझे पता है कि 6-7 साल बहुत
लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, बट 32,000 crore इज अ डिसेंट सम। तो अगर मैं एवरेज नेट नेट में अगर बोलना चाहूँ, तो this company should be kept in your portfolios from the people who are having a vision of 3 to 5 years or even more. फॉर लिस्टिंग इन पर्पस अगर मैं कोई एक समअप कर दूं ईवी एबिटडा पी का, तो अराउंड अराउंड 12 से 14% का स्कोप निकलता है। बिकॉज ईवी एबिटडा में ना कुछ चीजें होती है आप जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे वो एडजस्टमेंट बताना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आई पर्सनली फील कि मीडियम रिस्क टेकर्स कैन अप्लाई फॉर स्मॉल लिस्टिंग गेन्स, एंड जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है उन्होंने लिस्टिंग होने के बाद अगर उनको आईपीओ प्राइस से थोड़ा भी कुछ नीचे मिल जाए तब लेना चाहिए। मैं बोलूंगा कि आप आईपीओ स्किप कर सकते हो, एंड द पीपल हु आर सेफ प्लेयर्स कैन कंप्लीटली स्किप द आईपीओ। मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन इससे ये था, मतलब जब मैंने सबसे पहले Hyundai पढ़ा था, आई वॉज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि इसका प्राइस बैंड अराउंड 1860 रुपए गए थे। मैंने बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिखा भी है, वो बहुत लोगों को पता होगा यहाँ पे 1860। फिर मैंने कुछ चीजें कंपेयर करी, देना सेट की यार नहीं 1740 1760 कैन बी डिसेंट प्राइस बैंड, बट रियलिटी वाज 1960। मतलब आई पर्सनली फेल्ट कि मैं अगर मेरा प्रीवियस एक्सपेक्टेशन भी पकड़ू या फिर मार्केट और ग्रे ब्रोकर्स का भी अगर मैं एक सेंटिमेंट पकड़ू, तो कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 6 से 8% महंगा लाया है, विच इज रियलिटी। मतलब उन्होंने 1850 ही लाना चाहिए था, एंड दिस इज अ बिट एग्रेसिव प्राइसिंग। एंड अभी आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फिर ट्विटर पे आ चुका होगा कि पिछले 10 आईपीओ ने कैसे परफॉर्म किया है। 10 में से सिर्फ 2 ही ऊपर लिस्ट हुए थे, विच वॉज जोमेटो एंड डीएलएफ जो 2010 में आया था। तो इन सब चीजों को देख के आई एम ऑन अ बिट न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड। आई एम नॉट गोइंग इन टू निगेटिव साइड। आई डोंट फील कि ये कंपनी निगेटिव में लिस्ट होना चाहिए, बट इसका लिस्टिंग विल बी हेविली डिपेंडेंट ऑन द लिक्विडिटी सोकेज एंड द मार्केट सेंटिमेंट ऑन द लिस्टिंग। अब सिंपल कैलकुलेशंस करो कि ये कंपनी का रफ रफ में अराउंड 16 से 17 हजार करोड़ का फ्री फ्लोट डे वन पे अवेलेबल रहेगा, एंड कंट्रोल एंड मैनेजिंग दिस 16 to 17,000 करोड़ आज तक इंडिया में कोई नहीं कर पाया है। तो अभी कल शाम को इसका एंकर बुक आएगा, कुछ अच्छे नाम निकलने की उम्मीद है, लाइक ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, इंडिया के सारे टॉप म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए यूएस के, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ लार्ज एलोकेशन। रिपोर्ट्स में ये भी है कि बिल गिलफर्ड का भी फंड आने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसा कोई न्यूज नहीं है, बट बिली गिलफर्ड का भी एक फंड बहुत रिप्यूटेड फंड है। सो ओवरऑल फील द टोन इज ऑन अ पॉजिटिव साइड, बट safe or low risk takers should avoid the IPO completely. Thanks, Tanmay, for your comprehensive review. I had a lot of points to add. Maybe Rohit also had a lot of points, but taking a few questions. एक बार read कर रहा था कुछ questions, उनकी बात करता हूँ. So a few people, and maybe this will also cover some of the myths. Rohit, you might also want to do this, but yeah, because we were discussing about this for a longish period. But कुछ questions है जैसे कि Hyundai Motors, कोरिया वाली जो कंपनी वो 5 PE पे है, so might as well make sense to take that. What we need to understand is the growth outlook for the Korean parent company and the growth outlook for India is very, very, very different. In India, the consumption is on an increase, so there will always be a premium given to a company in India. The household incomes are increasing, so the level at which the cars would be bought would be a lot more higher to a developed country like Korea. That is why stocks in India or Indian market companies will always probably trade at a premium. So you can't really compare two companies across geographies and say that this one is cheaper, this one is expensive. That was one point. उसके अलावा जैसे एक point और किसी ने लिखी है कि dividend and again this is something which I have been hearing for a longish period of time. They've been taking dividend out, but it's something which is a common practice for this company. Hyundai Motors India is a cash cow for the company. उससे जो वो dividend है वो पहले भी withdraw करते आए हैं. It's not a new practice and it's something which management clarified as well. So I'm not defending the company in any way, but I'm just saying that it is a common practice. And then talking about royalty, they did increase royalty to 3.5%, but they did mention that this is what it will remain in the medium to longish period as well. Maybe with that, I'll go to Rohit, take a few of his pointers and then come back. I also had a few points to add after that. You're able to hear me, Manish? Yes, sir.
Okay, perfect. I have so many issues with connection today. But so I'll just take this slightly differently. I think Tanmay has covered it well. I'm just going to try and address some of the negative points that I've been seeing over and over again, which all honestly seem very poorly thought through kind of points. It's fine to raise points, but there needs to be some justification, or some people have to just research a little before they raise negative points blindly. So I'll just cover some of them with at least my read and my research on those points. I think the first one, Manish spoke about the dividend, where they've given a 10,000 crore dividend this year. To look at dividend as a percentage of the cash flow of the business, and you have to look at, is this something that the company does regularly or not? In the last 3 years, post-COVID, they did not provide dividend, and it's something that they've clarified also. Just look at their dividend history before that. If you go into ROC data, you can see their last 10 years of Hyundai India ka dividend and what percentage of the cash flows they've given. Just take an example of 2020. They gave 60% of their cash flow as dividend in 2020, the year before COVID, before there was a problem. And they've said multiple times in interviews that the dividends are in line with what they used to give before, and there is data to show that. So people jumping in saying, look at them taking the dividend just before the IPO, it's not true. Just look at data, see historically, is this something that they've anyway done before? Yes, they have done it, then why are you guys so, getting so worried about it? The next point is on the royalty, the 3.5% royalty. They've increased it, yes, but again, it's almost like a law that you're supposed to mark up that royalty based on, and there's an international guideline where you're supposed to mark up the royalty based on what is the actual perceived value. And one way to measure that perceived values is look at what other people charge. Look at what Maruti pays Suzuki. Suzuki actually charges 3.7% or 7.5% or something as royalty from Maruti. So this 3.5% is lesser. This is not, Hyundai stealing from, or Hyundai Korea stealing from Hyundai. This is, as per law, what is expected to be charged as what is considered fair value. So again, just think a little bit before just blindly sort of bashing the company of what they're doing. The third point that I've seen commonly is the offer for sale. Again, this is, in my view, perfectly reasonable. This is part of the guidelines of what India has said is okay. A cash flow generating machine, I think 17,000, 18,000 crore of cash flow last year, operating cash flow before dividends, and with a reasonable amount of cash in the balance sheet. Why would they unnecessarily want to increase their equity base? If they don't have anything immediately to do with the money, there is no, taking offer for sale is again perfectly fine. So many companies do this. Another point is on higher PE than peers, which I think Tanmay has covered. I'll just add one more point. I've seen people saying Tata Motors 10 PE, Tata Motors 11 PE. That's not how you calculate the Tata Motors PE. Tata Motors is 70% a UK business. UK business servicing largely the sort of European market. That business gets a 5-6 PE only because it is an international entity. It is not an Indian entity. In the international market, all of its peers trade at 5-6 PE. So if you take 70% of the business at 5-6 PE, and the India business, once you account for all the, like Tanmay was saying, there's this deferred taxes, they've had losses in the past, their effective tax rate, once you put the right tax rate, the India business actually close to 40-45 P. So again, it is not cheap at all. Tata Motors is a very good business, growing very fast and increasing its market share. So maybe it deserves a higher P, but it is not a 10-11 P business. So don't again think that this is much more, that is a much cheaper business. Not true. And I've seen some good arguments around market share and stuff, which are fine. But just want to make one point. These guys have, I think, shut off a couple of their hatchback brands, saying that hatchback as a segment is degrowing in India. So they don't want to focus on it. And you can see that their SUV percentage of their overall sales has gone up a lot more. It's, I think, 70%, which is the highest amongst all of the peers in this space. So a lot of reasons to what people are counting as negatives. It's good to do a double click and just see if there is, something, if there is a reason for what they're doing, or if what they're doing is genuinely a negative or not. I am fully expecting this business to get very, very high subscription from, well, obviously first an amazing anchor book, and very high subscription from QIB. I think if that happens, people will be waiting. There'll be, I think I saw this data somewhere on Chittorgarh. Someone had posted that almost 1.5, 1.6 lakh crore of mutual funds are sitting in Maruti, which is like 30-40% of the, market cap of Maruti. If you see the float available for Hyundai, it's only 16-17% is all they're diluting right now. If the mutual funds who are sitting and want another play in the passenger vehicle space, they really want more exposure to the auto space, it's bound to happen. They are going to come in and buy this company. So
I feel there is going to be there's much lower float available here. It's going to be a lot of interest in this company. This company will trade at a premium, given that it is a premium segment business. You know, the ASP is higher, the EBITDA is higher, that SUV focus, that is the segment of the market that is growing. My sense is this will do well. We will get absolute, certainty once the QIB number comes and once that, we see that amazing anchor book. I feel, and if you just look at their true trailing 12-month P, once you subtract what they did in, Q1 of 24 and add what they've done in Q1 of 25, they're only at 25 P, 25.5 or something, 25.4, some number, I don't remember the exact number, which is far lower than anybody else. So that, I feel that 10 to 20% is just there on the table. People who have the risk-taking ability, as long as the market itself does not tank in the interim, that is definitely a risk. But outside of that, I feel this is going to be an opportunity to make money with very, very, very high allotment chance. Chances are, if you're applying in BHNI, you'll get more than, the 2 lakhs. So I think it is definitely for risk takers, but I feel there is enough of a story here why this is actually not as expensive as people are making it out to be. Don't go by the gray market premium. It has proven to be wrong time and again, especially in the mainboard space. Just look at the fundamentals. Let's see how the QIBs turn up, and let's use that as the cue to apply. Thanks, Rohit. इसमें मेरा एक और point था. If you look at Creta, Creta is a very well covered car, and Hyundai's brand value is perceived as a premium product. Like Creta is covered as a premium product, and Creta EV is coming. So I feel the Creta EV is coming as close as Q4 of this year. So like just 6 months down the line. So I feel Creta EV will do very, very well. And even if it doesn't do well, the endless mutual funds will buy that story that it will do very well. And जैसा कि आपको अभी रोहित ने बताया, it has always had a SUV percentage higher than the industry. Like right now they sell, if I'm not wrong, again, can be wrong on the numbers, but the broad direction would be right. Right now they sell like 61% of their cars as SUVs versus the industry of 51%. 2 years or 3 years ago, the number was 51% of their cars were SUVs when industry was at 41%. So industry में increase हुआ है, SUV ज्यादा बिक रही है, 41% से 51% बिकने लगी. बट उसी टाइम में Hyundai की कार्स में 51% से 61% जंप हो गया. सो इट हैज ऑलवेज मेड दैट डिफरेंस जो ये ज्यादा एसयूवी बेच पा रही है. एंड एसयूवी ज्यादा बेच पा रही है. उसके बाद क्रेटा की भी एक एसयूवी आ रही है, ईवी, विच सीम्स लाइक अ वेरी हाईली प्राइस मॉडल. दे विल प्राइस इट वेल. When they price it well, people will buy, because of which it should have very good cash flows, and it will continue to be a cash flow generating business. So I feel I'm particularly, like, I feel it could have been probably like priced a bit lower, but again we are falling in that policy of where we kept the price when in mind it didn't meet it, so we have been completely stretching the company on XYZ reasons. It is not that bad a play, and I really feel all institutions would be very much interested in this. Tanmay and Yash, you guys have anything to add? I have got 3-4 questions in it. पहला तो the same is like इंडिया का Hyundai 26-27 टाइम्स पे है, कोरिया का 6 टाइम क्यों. सेकंड वन इज व्हाट इज द जीएमपी. थर्ड वन इज व्हाट इज द आउटलुक साइड. तो आई विल गो ऑन ऑल द डाउट्स. सी, पहला तो देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. आपको 3 चीजें, बेसिक चीजें सबको पता होगी. सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी. जो अभी साउथ कोरिया इज अ सोशलिस्ट, इन अदरवाइज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी कैन बी बेटर वर्ड. जहां पर मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है, जो ऑल द सेक्टर्स होते हैं, मेजर प्राइवेट सेक्टर्स, दे आर कंट्रोल्ड और हेडेड बाय द गवर्नमेंट. सो इन कंपनीज को, अभी आप इनमें कोई भी मार्केट ले लो, आप चाइना ले लो, कुछ एडवांस्ड अफ्रीकन मार्केट्स भी आप ले सकते हो, आप कोरिया ले लो. इन कंपनीज को हिस्टोरिकली सबसे कम मल्टीपल्स मिलते हैं. अभी चाइना जैसा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, बट रख लो. अलीबाबा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट बिजनेस. जैकमा का बिजनेस था वो आज भी, बाय द वे उनका आईपीओ आई थिंक 2018 के आसपास आया था. वहां से 40% स्टॉक करेक्टेड और आज 13-14 के पी पे चलता है. जो अगर इंडिया के वैल्यूएशन पे आ जाए ना, तो इनका मार्केट कैप रिलायंस के लेवल का होगा. तो मैं इसे बताना ये चाहता हूं कि ये जो कंट्रीज है लाइक साउथ कोरिया, लार्जर अफ्रीकन कंट्रीज और चाइना, इनके मल्टीपल्स बहुत लो थे. अगर आप
एक मीडियन पी निकालो ना इन फॉर एग्जांपल कोरिया का और इंडिया का, तो मीन पी फॉर कोरिया इज अराउंड अराउंड 6 टाइम्स, 5.5 6 टाइम्स, और इंडिया का मीन पी ना 22 के आसपास का है, 22.4 22.5 टाइम्स। तो वैल्यूएशन में 3.5 गुना का फर्क है ऑलमोस्ट। आई नो कि आप अभी आप करोगे कि वो 7 टाइम्स पे है, ये 26 टाइम्स पे है, तो ये 3.5 पे भी एट पार है, वैसा नहीं करना है। सेकंड इज व्हाट इज द जीएमपी, करंट जीएमपी इज 55 to 60 rupees, ओके, विच इज क्लोज टू 3%। एंड तीसरा चीज इज व्हाट इज द आउटलुक। इसका मैंने आधा पोर्शन ऑलरेडी कवर किया है कि दे आर सेट टू लॉन्च क्रेटा ईवी इन द Q4, मतलब 4 महीने या 5 महीने बचे, 6 महीने भी पूरे नहीं बचे। तो सेकंड वन इज ये और 3 ईवीज लॉन्च करने वाला। और अगर आपने ना इंटरव्यू इनका सीएनबीसी का या फिर इनका जो आईपीओ मीट हुआ था 3 दिन पहले शाम को, तो आपने अगर वो अटेंड किया होगा ना, इन्होंने 2 चीजों पे अच्छे से बात करी जो आई थिंक हिंट्स थी फॉर द फ्यूचर, कि कंपनी का फोकस अब अगले साल से प्रीमियमाइजेशन पे जाने वाला, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। एंड इफ दिस हैपन्स, इट विल बी एक्चुअली इंडिया फर्स्ट लिस्टेड लिस्टेड मतलब ओवरऑल ओईएम पकड़ लो जो उस सेगमेंट को कैटर करने वाली इंडिया में। अभी आप बोलोगे टाटा मोटर्स, बट इट्स एन ओवरसीज यूके मार्केट जहां पे ग्रोथ रेट अभी बहुत इट्स हाईली पॉसिबल कि वहां पे डीग्रोथ ही हो जाए टाटा मोटर्स का अगले साल या फिर इवन दिस फाइनेंशियल ईयर, वी नेवर नो। एंड वन मोर थिंग इज द हाइब्रिड्स, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स का पोर्टफोलियो भी पॉसिबल है। तो एंड सी द टेक्नोलॉजी Hyundai कोरिया हैज इज इनएविटेबल, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज है उनकी। मैनेजमेंट इज सी, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप Hyundai पे पैसा लगा दो, आई एम नॉट, बट आई एम एड्रेसिंग द नेगेटिव्स which are illogically said by the people, या फिर they don't have the knowledge to just pass on the statements। मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ, लगाना है कि नहीं। I have already said that only medium risk takers should go in it and others should avoid। Thanks, Tanmay. Maybe similarly, एक चीज अगेन वी आर स्लाइटली कवरिंग अ फ्यू मोर पॉइंट्स एंड आई अंडरस्टैंड कि हमने लोगों को कंफ्यूज ज्यादा कर दिया होगा क्योंकि हम बस सब पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। दिस इज अ ह्यूज स्पेस एंड वी वांटेड टू कवर ऑल दोस पॉइंट्स, बट यार मैंने देखा कि कई लोग ना Hyundai को पेटीएम से कंपेयर कर रहे थे, ओला से कंपेयर कर रहे थे। Try and understand that Paytm, Ola didn't have any profitability or way to profitability. This is a massively profitable business. इसका कैश काउ है, ये कंपनी इतना डिविडेंड देते आ रही है प्रोबेबली और डिविडेंड देते आएगी, सो इट विल फिट वेरी वेरी वेल इनटू ऑल ऑफ दोस म्यूचुअल फंड्स हु लाइक टू बाय द companies which are dividend paying per se. So I feel it is just absolutely wrong to compare them as a business. You can compare them कि ये IPO कितने बड़े थे and liquidity कैसे सोक होगी, that is a very important question. Will it do well on listing? I'm not 100% sure, but will it do good in the long term? I can say that with reasonable certainty that it should do pretty well. It should give you a good CAGR per se from here. Again, do not take any advice from me as such, but again, I might be applying, like I would be applying to this issue. I'll be lying if I say I might. I would, at least until this now, my mind is set that I will be applying to this IPO. Is this risky? Yes, it is risky. But the risk is majorly from a market outlook, and I do not see any company specific outlook risk in this business. With that, I just want to highlight, if you missed any of the parts which we have covered with respect to Hyundai, we'll also be putting them on our YouTube channel. ऊपर YouTube channel link है, आप उसको जाके subscribe कर लो. We will also do a very small video talking about probably the risk involved and how the anchor book is on the first day of IPO. Definitely cover the subscribe to the YouTube channel. It will go only there. It won't be a space. But I think we have done a lot of justice to Hyundai. Unless Tanmay, Rohit, Yash, you guys have anything to add, or you can just give your final verdict one last time. I think, yeah, my verdict is the same. I will be applying. I will definitely moderate the strength of the application based on the QIBs, but my expectation is that the QIBs will come heavily and the anchor book will be top notch. So with that in mind, if that is the case, I will definitely apply full force. If that breaks a little, then I will look at how to moderate my risk. That is my view. यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द सब्सक्रिप्शन फिगर्स यू आर एक्सपेक्टिंग। तो मैं पर्सनली QIB में 1.5 to 1.7 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
which is roughly 25 to 30 times. And overall मैं IPO का बात करूँ तो I'm personally expecting 9 times to 10 times over subscription. Retail will be under subscribed. SHNI भर जाएगा पूरी तरह से. Big HNI का थोड़ा सा मूड माहौल पे सेंटिमेंट पे रहेगा बेस्ड कि ये भरेगा कि नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन वाइज. मनी वाइज तो भर जाएगा. Again, want to highlight a lot of the will depend. Sorry, no, if 1.6, 1.7 lakh crore comes in QRB, then that is a phenomenal outcome. Yeah, I will borrow accounts to apply at that moment. मैं कुछ बताता हूँ. ये जो शॉर्टर, ये जो ग्रे में शॉर्टर लोग हैं ना, वो एंकर बुक देख के शॉर्ट कवर करने को आने वाले. मतलब उनके एंकर बुक देख के आंखें खुले की खुली रह जाएंगी. तो भी मेरे को क्वेश्चन थे कि एंकर बुक पेटीएम की भी इतनी अच्छी थी, बट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल बिजनेस बिहाइंड इट वाज वेरी डिफरेंट. इट इज नॉट द सेम बिजनेस. टू बी ऑनेस्ट ना, पेटीएम की हालत है ना रेगुलेटरी कंसर्न्स की वजह से ज्यादा खराब हुई. अगर सी आई एम नॉट डिफेंडिंग पेटीएम, ओके, मैं नेवर इन्वेस्टेड इन इट, बट अगर आई नो कि जो आईपीओ था वो तो मतलब नॉनसेंसिकल वैल्यूएशंस पे था, मैं वो कंप्लीटली एग्री करूंगा. बट जो स्टोरी पेटीएम 2022 में लेके आया था ना, वो बुरी नहीं थी. ओके, आई नो प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई आउटलुक नहीं था, बट उस टाइम डिजिटाइजेशन, यूपीआई, ये सब चीजें वो फ्यूचर सेक्टर्स होने वाली थी. सी बट दी रेगुलेटरी कंसर्न्स हिट दी कंपनी. बट सी वही होता है ना कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलेटर्स, फॉर एग्जांपल अभी फाइनेंस हो गया, बैंक एनबीएफसी हो गई, ये सारा डिजिटाइजेशन हो गया, या फिर एग्रीकल्चर चीजें या फिर कमोडिटीज हो गई, तो ये गवर्नमेंट से लिंक चीजें होती, तो इनको मार्केट है ना हमेशा एक लो मल्टीपल्स देता है. बट ना ऑटो सेक्टर्स में अगर मैं जीएसटी वगैरह ये 2-3 चीजें छोड़ दूं, आई नो जीएसटी इज अ मेजर कंसर्न, बट वो एक अगर चीज और कुछ सब्सिडीज हो जाए ईवी पे, एक दो चीजें छोड़ दो, तो ऑटो इंडस्ट्री एज एट अ मैक्रो लेवल पे कोई ऐसा बड़ा कंसर्न गवर्नमेंट के साइड से या फिर कोई थर्ड पार्टी कंसर्न आना थोड़ा मुश्किल है. तो इट्स नॉट कि यू कैन नॉट कंपेयर दिस टू पेटीएम. और आई एम श्योर कि आप एंकर बुक पेटीएम से तो फार बेटर ही रहने वाला, जो मुझे इनपुट्स मिले उसके हिसाब से. And you can see something like a Paytm, LIC, all of these are very, very low QRB subscription, low final subscription figures. It will give a very strong signal in such issues, I feel. We will get a good idea on Thursday before the final, before close. मैंने एक क्वेश्चन इन ग्रुप पे लिखा था, यही पूछ लेता हूँ. विल दिस कंपनी बी अ लार्ज कैप ऑन लिस्टिंग? आई नो माइट बी अ वेरी वेरी नाइव क्वेश्चन, बट लाइक will it be a large cap on listing? 1001%. So all the large cap mutual funds will also be interested, right? हाँ, ये तो होने वाला है. और एक चीज मैंने जो आईपीओ मीट हुआ था ना, वहां पे किसी तो आई थिंक नुआमा के एनालिस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने एक चीज पूछा था उनसे कि आपने जो है डिविडेंड पॉलिसी, मतलब वो स्पेशल डिविडेंड का अगर मैं बाजू में रख दूं, नॉर्मल डिविडेंड जो इनका 3 से 4% रहता है, क्या आप वो कंसिडर करोगे? तो दी सीईओ हु इज द इंडियन गाय said that our board might take a decision on it, and this a similar kind of or at par the dividend policy can be announced. तो ये भी एक चीज है कि जो डिविडेंड फेवरेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनको 3.5-4% डिविडेंड और 5 से 7% एप्रिसिएशन करके 12-13% कंपाउंड ग्रोथ मिलता है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा. और इंडिया में अगर मैं 2023 या फिर उसके पहले का एरा पकड़ू, तो दिस सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूज्ड टू ओन, कंट्रोल एंड लीड द फाइनेंशियल मार्केट्स. और यहाँ पे सिमिलर चीज होने की संभावना है कि all the dividend saver companies or dividend yield companies or the we can say conservative kind of funds, या फिर जो 20-30 साल से बहुत अच्छे डिलीवर कर रहे हैं, लाइक 20-30 साल का अगर सीएजआर पकड़ो तो 12% 13% में कोई बुरी बात नहीं है. तो ऐसे फंड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले, और इसमें डैम श्योर की 10 से 20 फंड्स आपको एंकर बुक में दिख जाएंगे जो डिविडेंड यील्ड वाले फंड्स होंगे. और इसमें सुपर एनम फंड्स भी ऑस्ट्रेलिया का, वो भी आने की बहुत पॉसिबिलिटी है. सुपर एनुएशन फंड करके एक फंड है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी डिविडेंड यील्ड एक बड़ा एफआई है. तो इट इज ऑल्सो हाईली इंटरेस्टेड इन इट. वी कैन सी दीज नेम्स इन द एंकर बुक्स फॉर श्योर. Yeah, I think we have with that covered Hyundai for now. I just want to repeat, हम एक और बार Hyundai का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, probably I, me and Tanmay, or we'll see how we do it. But that is after Anchor. We'll do it on day one and we'll post it only on the YouTube channel. So please go ahead and
follow the YouTube channel ताकि आप वो वीडियो भी देख पाओ. उसमें हम we'll try and do, like, I understand right now we just do voice, so maybe we'll do a video in it as well. So definitely follow the channel, subscribe to the channel if you find it useful. Definitely follow all four of us here on Twitter as well. But maybe any parting comments on Hyundai from all four of us, or we can probably move to the last issue, which is Lakshya Powertech, which would probably seem we will not be able to do justice to it, at least in terms of length we spend on it. But yeah, any parting comments on Hyundai? Just one. I think I remember, I don't know if it was a news anchor or someone saying that all the FII money that has been going out for the last 1 week is not because of China, it's because people want to apply for the Hyundai IPO. So I'm just hoping, I know it's a joke, but I hope that is true. And we will see some liquidity coming back, but B, will see a good subscription for this company. मैं एक लास्ट चीज बोलूंगा, बहुत लोग हाईली एक्साइटेड है कि मैं लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई करूंगा और रिटेल तो 6.60 भरना है, मुझे मिल जाएगा. आई विल से कि डे ट्रेडिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, नहीं मिलने वाला, भूल जाओ. ये 2-4 गुना नहीं 10 गुना हो जाने वाला है. सो लोअर प्राइस बैंड पे लगाने की सोच रहे ना, वो उन्होंने एक तो छोड़ देना चाहिए, फिर अपर पे लगाना चाहिए. ये लोअर पे इशू होने का चांस ना के बराबर है. Perfect. Would again highlight a couple of negative points, at least from my end, what I wanted to see. Kia is a different brand. एक question भी था ये, क्या Kia Hyundai India में जाती है? Does it report into that? It doesn't. Kia will continue to be a separate business, and since both of them are controlled by the same management, there is a conflict of interest. Keep that in mind. Also, be very mindful of the QIB interest. This is not one of those issues which HNIs or retail can probably power through. It needs QIB interest. So be mindful of you are applying or not. Not the best answer, but look at what QIB is doing and probably try and time with the institutions and get out with the institutions. Easier said than done, but this is one of those examples per se. With that, I'm seeing कि Hyundai का GMP has been increasing. It has went up from 55 to 65. I don't know. अरे मैं भी सिमिलर चीज ही बोलने वाला था अभी कि यार 58 सेलर था, स्पेस होने से शुरू है पहले, अभी 67 पे बायर. कौन खरीद रहा है क्या पता इन 600 लोगों में से. यार ये हर बार हो रहा है यार. आई रिमेम्बर वन थिंग कि अपन ने जब सबसे पहला स्पेस किया था, आई थिंक मेरे को जो याद आ रहा है, इट वाज बंसल वायर एंड एमक्योर. साला वो जब चालू होता स्पेस 24.5% का प्रीमियम था बंसल पे, अगले 1 घंटे में इट वॉज 29%. मतलब लोग स्पेस देख के यहाँ पे प्रीमियम्स में ऑयल लगा रहे. यार ये मत किया करो, अपने अपने मतलब कैपेसिटी के हिसाब से चीजें करो. वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी कैन बी श्योरली रॉन्ग. Manish, you're on mute. Sorry, yeah. I was saying, yeah, we are not SEBI registered and we do not subscribe to the grey market in any possible way. Take your own risk, figure out about the companies on your own. But with that, maybe let's go forward and talk about one last company, Lakshya Powertech, which is a SME which is opening up, I think tomorrow, if I'm not wrong. No, there's still time. It is opening up on 16th of October, which is a Wednesday, and the issue will remain open till Friday. The company, it's a 50 CR issue, so decent is size, and the company is very interesting. It's from GYR, and the company is in EPC segment for oil and gas powered power plants, etc. So maybe, Rohit, do you want to go ahead and talk about Lakshya Powertech? Because I felt it was prime candidate for a 90% listing, if I'm not wrong. But yeah, what is? I think I can finish the review also then very quickly. But okay, let me try and quickly explain what they do and share my rate. So as Manish said, yeah, they are an IPO, a 50 crore IPO. It's opening next week. I think it closes on Friday, so Wednesday to Friday. Raising 50 crore of which 30 crore is for working capital, 5 crore is for loan repayment, and the rest is for the GCP. So they are an EPC and O&M. So O&M is operations and maintenance business. They are focused mainly on the oil and gas segment. They do a little bit of power, little bit of renewables, little bit of data centers, which I'll do. But I'd say the majority of their work, and especially what they've done historically, is to do with oil and gas maintenance. What they've done is they've gone from being the good thing, as you know, over the last 12, 13 years, they've gone from doing some freelancing work
to being a subcontractor to being a contractor who takes projects, directly from clients, which is always a good thing. And they've grown their scale now such that they can bid for 200 to 50 crore single projects for 200 to 50 crore, where, for example, last year the revenue was 150 crore. So they've increased their size and scale very, very well over the last 10, 12 years. Today, about 45% of the business is EPC. This is a segment which is growing very fast. EPC is, of course, everything, right? They're doing engineering, procurement, which means they make margin on the products that they procure as well. Then, of course, the construction, the commissioning, the deployment. Whereas in O&M, they're only doing the operations and maintenance of something that has already been, set up by somebody else. So the margins are generally higher in EPC compared to O&M, and the fact that they're moving from, more towards EPC is good. So today about 45% EPC, 55% O&M. I'm ignoring the small 2-3% of what they call special services that is not material. And they want to split this going forward to a 65-35 EPCs to O&M. So again, the way they're thinking about things seems to be solid. I'll add one point here. So oil and gas sector is what it is. It's a old segment, inherently not a, I'd say, fast growing kind of segment. But one theme that has sort of stood out here is the data center sort of play that I've seen many people talk about. So I'll just spend like a moment on that. So what they do today is they are, as part of the power solution that they have, power is obviously crucial to a data center. They need, 100% runtime. They cannot sort of fail. And so they generally need a lot of backup. These guys are providing the installation, commissioning, and sort of integration of the backup, emergency backup and the fuel handling systems for this emergency power, as a subcontractor for a couple of companies. There's a company called Powerica and GMMCO. Both of these do this, and they are the subcontractor for this component of the data center sort of theme. So it's hard to say that they are a direct player in the data center space. They don't do any of the actual data center setups and, panels and all of those things that are part of data center yet. He has mentioned in an interview that yes, this is something they want to do. The good thing is they obviously have an in into this segment. I think their current order book in the data center theme is around 20 crore. They've delivered, at least in the past data that's there in the RHP, about 18 crore is stuff they've delivered within this data center theme. And they're delivering currently another 20 crore. So I'm not convinced that they're there yet, but of course they have at least made a start. So I think it's a good story to have for the future. So I'll kind of leave it at that. They have a decent pending order book of about 260 crore, of which 120 crore is from EPC, 140 crore is from O&M. O&M is generally a much longer, 3 to 5 years to deliver the order book, whereas EPC tends to happen in about one and a half years, you can say. So their EPC order book will also, I think, circulate and cycle through a lot faster. Good numbers. Last year they did 150 crore, as I mentioned, up from about 55 crore, which is exceptional growth. Good increase in margins, which kind of shows from the increased scale and also the increase in the share of EPC component. They're at about 10% PAT, which is healthy. It's actually very good. One thing here is they've also shown, I think, 5-month number till August. This business is seasonal. There is absolutely no point in looking at that number. There is no point in trying to find some, extrapolating that number and saying in 5 months they've done 5 crore PAT. So in 12 months they'll do, 12, 13 crore PAT, which is less than last year. If you were to do that simple extrapolation, this is a completely seasonal business. H2 will be very heavy. For small companies, H2 can be 2x of H1. So there's no point in looking at that number, just that they are continuing to deliver numbers. And if you don't have the same number from the last year period, you really can't infer anything. So this business is coming basically at about 11.5 PE on FY24. And I would say that based on their projections, based on what he's mentioned in the order book that they are going to complete from the EPC side, from the O&M side, and what they have mentioned from their working capital calculation, they should be able to do 220 to 250 crore in revenue for this year as well, which is again another 50-70% jump in sales. I feel it is deliverable, which means that they should be able to do maybe 25 crore PAT and for the entire year. So that extrapolation of 5 months, in my view, there is no point in doing that. The main issue for them is their cash flows, which are consistently negative. They've had, the trade receivables are okay, but just overall, they're not able to manage their cash flow. I think last year was 20 odd crore negative cash flow, which is the reason why the big use of their funds is for working capital.
I would say this is a bit of a sector thing. Many of the players in this kind of industrial EPC are generally negative cash flow. So I don't think this is per se a big negative, but it leads to a certain, I'd say, sector multiple or multiple that people are willing to pay. Whatever it is at 11.5 P, it is very, very attractively priced. I think today the market gives a much higher multiple to general industrial EPC companies. They've mentioned a company called Asian Energy as a peer. I would say they are a competitor, but they're not a peer because most of what Asian Energy does is something else altogether. They do a lot of, I think, seismic activity tracking and data and stuff, and they also do some of this EPC and O&M for oil and gas. There is no direct peer, honestly, in the SME segment for sure. Even in Mainboard, I couldn't find anything. So for me, the closest peer I felt where the story is also somewhat similar was Atmasco, actually, which is also largely an industrial EPC player. Atmasco does it for, ferrous, non-ferrous sort of industries, whereas this guy does mostly for for oil and gas. Atmasco has this defense story, which is going to come hopefully very soon. Similarly, Lakshya has a data center story, which is another sort of futuristic theme, but both have some way to go, to prove and to execute, and to say that one is a defense company and the other is a data center company. But market, I feel, will give it a better multiple than other, plain Jane EPC companies. Atmasco trades at between 30 to 40 P based on, the mood and sentiment and ESM1, ESM2 and all of that. So, I feel there is enough on the table. One other small point is I found the promoter to be a little bit dull, though I treat that more as his, just his general demeanor, and not a judgment on his quality. But I think there are a couple of interviews online, so people can listen to those and make their views. And I would say whatever they have executed so far cannot be discounted. They have done extremely well. Gear is generally a very good Olympics, good companies, does not do any musty with the numbers. So overall, for me, it's a no-brainer apply. Now the question is, this 90%, will it list? There's every chance it will list at 90%. It can be up. I mean, it would then be at almost 21p, I think, at that point. It feels like there is still some value left on the table, given that there is a story that goes beyond just EPC. It goes into this data center play. They have to honestly prove a lot more on data center to actually say that they are in that segment. It's a very small part of the business, and data center is a lot more than just doing backup systems for them. But let's see. I feel reasonably bullish. I think we'll get a sense also with the anchor book when it comes out. But yeah, overall, quite bullish on this company and can take a call closer to the listing on how to play the listing, when it happens. Thanks, Rohit. Just want to candidly say I didn't listen to much of what you were saying. I was still caught up in that Hyundai discussion. I was thinking if it is what we covered made sense or not. But yeah, 1 or 2 points from my end on Lakshya Powertech. Definitely go through the interview. From what I could hear from a few people, the promoter quality was slightly questionable. So take a call basis that. It's just that at least for IPO application, it is a no-brainer to apply. But it will also be it will also be conflicting with Hyundai. I know मैंने in fact chat में बहुत अच्छा comment पढ़ा था where someone had written that the Bajaj question was मिलेगा कि नहीं versus Hyundai में the question is भरेगा कि नहीं. So I completely agree with that point. But so if you are applying in Hyundai and if you want to reuse those funds, that will not be possible in this SME. Although it is a very small SME and there's a very, very, very high probability that the subscription will be over the roof. So it is in all likelihood going to be a huge lottery. Keep that in mind versus a Hyundai where it will be a sure shot allotment, at least in retail. So even if it is not sure shot, there will be a very high probability of allotment. So keep that in mind. And again, do what the QIPs are doing, at least for Hyundai issue. With that, we've kind of covered up the space, unless Tanmay, Rohit, you have anything to add on Lakshya Powertech. I have a small pointer on Lakshya. I support the statement that the promoter was a bit offside. मतलब बात करने में इतना confidence नहीं था, और मुझे भी 2-3 रिव्यूज प्रमोटर के हिसाब से इतने क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट गिविंग नहीं है. बट एक चीज उन्होंने मेंशन करी जो मुझे लगी कि दिस कुड सेल दी स्टोरी, दैट
the company is currently working with Nextra, which is I think third largest data center company in India after Yuta and और एक कोई तो है. तो आई फील कि ये अगर रेवेन्यू इनका कंट्रीब्यूशन जो आज अभी करंट है उनसे 1.5 से 2 गुना अगर हो जाए तो ये डेटा सेंटर थीम के ऊपर एक अच्छा मल्टीपल लेके जाए. एंड आई फील इट इज एन आइडियल कैंडिडेट ऑफ 90% लिस्टिंग. एंड द पीपल, मैंने कहा था कि मीडियम रिस्क टेकर्स ही Hyundai में जाए, तो जो बचे हुए सेफ प्लेयर्स या फिर लो रिस्क टेकर से वो आप श्योरली लक्ष्य में अप्लाई कर सकते हो. मुझे इसमें रिस्क एटलीस्ट फॉर द लिस्टिंग दिखता नहीं है. Yeah, with that, we've kind of covered all the companies. Just want to highlight two things. If you guys feel that today's space was useful and you would want us to do one more space with respect to Hyundai on the second day, after the second day closes, please comment a yes in chat or something like that. We will kind of consider if we want to do one more space, although we have already covered almost everything we had to do with Hyundai. Other than that, I've also pinned my YouTube channel at the top. If you feel you have missed listening to any of the companies, definitely follow the YouTube channel. We will definitely do one more video there after Ankle List releases where we'll talk about some of that. So yeah, with that, we'll end today's space. Thank you so much guys for joining. Have a good day ahead.